स्पेशल सेंसेस का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 54 यूनिट नंबर 10 से आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा एंड इट टॉक्स अबाउट द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। Now both these senses, हमारा चीज़ों का जो जायका हम चखते हैं, the taste and the smell, जो बू हमें आती है, that can be a खुशबू और a बदबू, but that's the smell thing which we have the capacity to feel. They are both considered as chemical senses. Chemical senses देखो इसलिए क्योंकि हमने vision का sense देखा है, that is because of light excitation. Light excite करती है, so there is a photoreceptor layer, retina, जिस पर excitation generate होती है और फिर optic nerve से communicate होती है. We have air, और एयर की मैकेनिक्स इस तरह से है कि देयर इज साउंड वेव्स, वाइब्रेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड देन वाइब्रेशन ऑफ द मिडल एयर के अंदर जो छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बोन्स हैं उनमें वाइब्रेशन ऑसिलेशन होती है और इस तरह मैसेज जनरेट होता है, इम्पल्स जनरेट होती है। बट हेयर वी विल सी कि द मैसेज इज जनरेटेड एक्चुअली बाय द केमिकल। सो ये आपकी टंग है फॉर एग्जाम्पल, सो दैट्स फॉर एग्जाम्पल योर टंग, और इस पर देयर आर रिसेप्टर्स एंड व्हाटएवर यू ईट हैज लाइक सम केमिकल्स ऑब्वियसली, और वो केमिकल्स जब इस पर टच करते हैं दिस इज हाउ यू स्टार्ट फीलिंग द टेस्ट। और स्मेल का भी ऐसा ही है कि दैट इज योर नोज, और यहाँ जो नेजल म्यूकोजा है उसमें देयर आर सीलिया कंटेनिंग सेल्स which are actually activated या depolarized या जिनमें excitation होती है because of the small chemical particles which are present in the air, they enter in your nose and they hit those cells. So since taste और smell दोनों जो हैं they are activated because of chemicals, they are called chemical senses, okay? The sense of taste and smell allow us to separate undesirable or even lethal foods. So I mean you can have an idea कि यार इस खाने की स्मेल बहुत ही बुरी है या इसका टेस्ट बहुत बुरा है, सो अवॉइड दिस, ओके? एंड देन वी ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई प्लेजेंट और गुड स्टफ, ओके? दे also elicit physiological responses involved in digestion and utilization of food. The sense of smell allows animals to recognize the proximity of other animals or even the individual animals. So सेंस ऑफ स्मेल बाज एनिमल्स की बहुत ही स्ट्रांग होती है, दे कैन एक्चुअली फील कि कोई और एनिमल मौजूद है नज़दीक में which can be harmful to them, या कोई और ह्यूमन बीइंग मौजूद है. Finally, both senses are strongly tied to primitive emotional and behavioral function of the nervous system. So very important point. जितने भी स्पेशल सेंसेस हैं आपने ये नोट किया है कि they are all connected to the emotional and the behavioral output of your however you behave. So the point is कि अगर आप किसी को, मैंने पहले भी ये बात बताई है आपको कि if you see somebody whom you like, you feel happy. If you see somebody whom you don't like, you don't feel happy. So seeing is not only seeing and having the image, it is also about interpreting and connecting it with other parts of the central nervous system ताकि आपका emotional behavior जो है वो नजर आ सके. अब हम इस वीडियो में ऑब्वियसली हमें दो टॉपिक्स कवर करने हैं, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ स्मेल. सो वन बाय वन दोनों को कवर करते हैं. द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू टच इज द सेंस ऑफ टेस्ट. Taste is mainly the function of the taste buds which are present on the tongue. Simple story, okay? So they are present in mouth, but it is common experience that one's sense of smell also contributes strongly to taste perception. In addition of texture of the food as detected by the tactual senses of the mouth and the presence of the substance in the food that stimulate pain endings, such as pepper, greatly alter the taste experience. So जितनी मिर्ची ज़्यादा होगी आपका टेस्ट एक्सपीरियंस उतना चेंज होगा, कम होगी. सो विल सी कि कौन कौन से डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेस्ट हैं जो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं. द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट लाइज इन द फैक्ट दैट इट अलाउज द पर्सन टू सेलेक्ट द फूड इन अकॉर्ड विद द डिजायर्स एंड ऑफन इन अकॉर्ड विद द बॉडी टिश्यूज मेटाबॉलिक नीड. वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी एक होता है, एक वर्ड हम यूज करते हैं, नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है यार, क्रेविंग्स होती है ना, कि आज मुझे आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, आज मुझे KFC खाना है तो खाना है, आज मुझे चावल चाहिए तो चाहिए, आई मीन राइस चाहिए तो चाहिए. तो पॉइंट ये है आपकी बॉडी इट फील्स फॉर समथिंग, और इसका ताल्लुक भी टेस्ट बड्स के साथ है. सो दिस इज व्हाई वी से कि जो स्पेशल सेंसेस हैं दे आर कनेक्टेड विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन. सो ये पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड आपका बिहेवियर होता है. प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन, the identities of many specific chemicals that excite different taste receptors are not all known. For practical analysis, primary sensations of taste have been grouped in 5 general categories: sour, salty, namkeen. सोअर को पता नहीं क्या बोलेंगे यार आप. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द वर्ड सोअर, ओके? स्वीट यानी मीठा, बिटर यानी कड़वा, एंड यूमैमी. हो सो इतने सारे टेस्ट आप बेसिकली जो है ना महसूस कर सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे यार सोर तो हमें पता है, सॉल्टी भी हमें पता है, स्वीट भी हमें पता है, बिटर भी पता है, ये उमैमी क्या? ये बेसिकली एक जापानीज वर्ड है, इट्स अ जापानीज वर्ड, और इसका
लिटरल मीनिंग है डिलीशियस. सो एनीथिंग विच यू आर अनेबल टू डिस्क्राइब एज अ टेस्ट कि ये मीठा है कि तीखा है कि क्या है, यू जस्ट से इट इज डिलीशियस, इट्स वाओ, इट्स जस्ट वाओ. सो ये जो वाओ फैक्टर है, दैट इन जापानीज इज umami. A person can perceive hundreds of different taste. They are all thought to be combination of the elements जो अभी यहाँ पे बताए गए हैं. ठीक है. Sour taste जो है, it is caused by acids. इसको अगर हम अपनी भाषा में कन्वर्ट करें, सो बेसिकली तुर्श, यानी कभी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड गया है नाक में, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऐसा जो तुर्श या मतलब वो सिट्रस कहना भी ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑरेंज का जो टेस्ट होता है वो प्योरली सोर नहीं होता, उसमें स्वीट कंपोनेंट भी होता है. सो सोर इज समथिंग विच इज जनरली कॉज्ड बाय एसिड्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन, एंड द इंटेंसिटी ऑफ द टेस्ट सेंसेशन इज अप्रॉक्सिमेटली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन. यानी जितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन होगा उतना सोर टेस्ट होगा. दैट्स हाउ इट इज. वैसे इस टेस्ट के कुछ वो आते हैं, पापड़ शापड़ आते हैं यार, आपने प्रिंगल्स खाया है, सोर क्रीमी प्रिंगल्स आता है, सो यू कैन हैव एन आइडिया व्हाट सोर टेस्ट इज. ओके. सॉल्टी आप सबको पता है, इट्स लाइक नमक वाला जायका. इट्स बिकॉज ऑफ द आयोनाइज्ड सॉल्ट्स, मेनली बाय द सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट वेरीज समवॉट फ्रॉम वन सॉल्ट टू द अदर सॉल्ट, बट दे ऑब्वियसली ऑल हिट द सेम रिसेप्टर्स ऑन योर टंग. स्वीट भी आपको पता है, मीठा बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है. दैट स्वीट टेस्ट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी सिंगल क्लास ऑफ केमिकल. सम ऑफ द टाइप्स ऑफ केमिकल्स दैट कॉज दिस टेस्ट इंक्लूड शुगर, ग्लाइकॉल्स, अल्कोहल, कीटोन, एमाइड्स, ईस्टर. दे ऑल प्रोड्यूस स्वीट टेस्ट. ओके. Note specifically that most of the substances that cause a sweet taste are organic chemicals. It is especially interesting that slight changes in the chemical structure can simply convert them from sweet to bitter. Okay, और bitter जो है कड़वा, बिल्कुल बुरा. The bitter taste, like the sweet taste, is not caused by any single component. Here again, different compounds. They are usually organic compounds. Two particular classes of substances have been identified. Number one are the long chain organic substances containing nitrogen, and then the alkaloids. Okay, in medicine such as quinine, caffeine, strychnine, nicotine, ये सारी अल्कलॉइड्स की एग्जांपल्स हैं जो मेडिसिन में, मेडिकल प्रैक्टिस में यूज भी होती हैं. करेला खाया ना, कैसा बिटर टेस्ट होता है, वो वाली सिचुएशन. सम सब्सटेंसेज दैट इनिशियली टेस्ट स्वीट हैव अ बिटर आफ्टर टेस्ट. वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई टोल्ड यू माइनर change in their chemical composition can actually change the whole perception of the taste. This is actually true for saccharin, which makes the substance objectionable to some people. High concentration of salt may also lead to bitter taste. आप बहुत सारा नमक मुंह में डाल के देखें, वैसे मत डालिएगा, बिकॉज उससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर जाएगा. बट एनीवेज, इफ यू बाय चांस डू दिस समटाइम्स, यू विल नोटिस कि इट एक्चुअली फील्स बिटर. द बिटर टेस्ट व्हेन इट अकर्स हाई इंटेंसिटी के साथ अगर होगा, यूजुअली कॉजेज द पर्सन और एनिमल टू रिजेक्ट द फूड. आप नहीं पसंद करेंगे उस खाने को. दिस रिजेक्शन वाला जो रिएक्शन है इज अनडाउटेडली एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिटर टेस्ट सेंसेशन, because many deadly toxins found in the poisonous plants are alkaloids. So that's your inbuilt evolutionary response कि जब कभी कोई bitter taste आपके पास आता है, you tend to avoid that food. Okay. Umami taste, it's a Japanese word मैंने आपको बताया, which basically literally means delicious. It designates a pleasant taste sensation that qualitatively actually is not sour completely, not salty, not sweet, or not bitter, but it's something wow. Umami is the dominant taste food containing the L-glutamate, such as meat extracts and aging cheese. Wow. I mean, these are expensive stuff. The pleasurable sensation of umami taste is thought to be important for nutrition by promoting ingestion of protein. So, because it's in aging cheese and meat extracts, so high protein content basically. So आपको अभी आइडिया दिया है कि कौन कौन से डिफरेंट तरह के टेस्ट हैं जो आप फील कर सकते हैं. आपने एक आइडिया ये देखा कि सेंस और स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट जो है, दे आर लार्जली एसोसिएटेड विद दिस थिंग, फूड स्टफ, कि आपने क्या चीज खानी और क्या नहीं खानी. सो दैट्स द बिहेवियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके. नाउ थ्रेशोल्ड फॉर टेस्ट. The molar threshold for stimulation of sour taste by hydrochloric acid averages about 0.0009 molar. So this is something, the molarity that you can actually detect. इससे कम होगी तो आपको sour taste का पता नहीं चलेगा. Salty taste के लिए it is 0.01 molar, and सबके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है. It's not important actually to remember them. Okay, exam में इस तरह से पूछते भी नहीं है. Taste blindness, well, some people are taste blind. उनको पता ही नहीं चलता. For certain substances, especially for different type of thiourea compound, a substance used frequently by psychologists for demonstrating taste blindness is phenyl thiocarbamide, for which about 15 to 13% of all people exhibit taste blindness. So that's a very common one, very prevalent, जिसके लिए
टेस्ट ब्लाइंडनेस काफ़ी कॉमन है, सो दैट इज़ यूज टू चेक टेस्ट ब्लाइंडनेस. वैसे यार ऑन अ लाइटर नोट, अगर किसी को हस्बैंड ऐसा मिल जाए जो टेस्ट ब्लाइंड हो, उस वाइफ के मजे हैं, बिकॉज वो कोई भी खाना बनाए, किसी भी टेस्ट का बनाए, उस बेचारे को पता ही नहीं लगना है ना. खैर पता लग भी जाए तो उसने क्या उखाड़ लेना है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. नाउ टेस्ट बर्ड्स एंड देयर फंक्शन. अब ये इंपॉर्टेंट है टेस्ट बर्ड्स की जो कहानी है, बिकॉज यू शुड बी एबल टू नो कि हाउ बेसिकली योर टंग इज इक्विप्ड विद डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स एंड टेस्ट रिसेप्टर्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेस्ट बर्ड. इफ यू सी हियर, they actually are specialized cells. There are taste cells in your body which have the capacity to taste things, and at the top they have taste hairs which are microvilli, so they can actually be stimulated by chemicals here. Okay, so the chemicals actually chemically diffuses in there and is perceived by the taste cells, and then the taste cell on their lower halves are connected with the sensory afferent fibers, which then go towards the nervous connection. So whatever you eat comes on your tongue, sensed by the taste cell and transported to the sensory afferent fiber. तो ये सारी स्टोरी इस तरह से है. ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या बात कर रहे हैं. फिगर 54(1)b. सो ये फिगर वी जस्ट हैड अ लुक एट दिस फिगर राइट नाउ, और मैंने आपको पहले ही बता दी. इट शोज अ टेस्ट बर्ड which has a diameter of about, well, diameter not important for you to remember. There are some supporting cells which are called the substanticular cells, but the major cells are the taste cells, which are the main functional cells. So substanticular cells are basically supporting cells here and there, but the main cells which are doing the job of feeling the taste are the taste cells. Okay, the taste cells are continually being replaced by mitotic division, regeneration हो रही है इनमें. Others are mature cells that lie towards the center of the bird. These soon break up and dissolve. Not important line. The average lifespan of the taste cell is estimated to be about 10 days. You get new fresh taste feeling cells every 10 days. Okay, although there is considerable variation, obviously, 10 days would not be like a rule of thumb कि हर कोई 10 days पे ही renew होगा. The outer tips of the taste cells are arranged around a minute taste pore. There is a taste pore जिसमें actually chemical dip करता है. So if you look at the diagram here, there really are taste pores, and the taste pores are then internally lined by the microvilli and then the whole cells. That's the arrangement. Interwoven around the bodies of the taste cells is the branching terminal network of taste nerve fiber that are stimulated by the taste receptor. Some of the fibers of the whole story I've just told you, this stays the same, that you eat something, it goes into the taste pore, sensed by the microvilli and these taste cells and communicated via the nerve. Okay? Simple story, not big deal. Now, location of the taste bud. The taste buds are found on 3 types of papilla of the tongue. Tongue की anatomy याद है? There are papilla, circumvallate papilla, fungiform papilla. So, large number of taste buds are on the walls of the troughs that surround the circumvallate papilla. Moderate numbers are present on the foliate papilla, and moderate numbers of taste buds are also present on the fungiform, but the biggest number is present on the circumvallate papilla. So, that's something that you need to remember. Okay? Right. Additional taste buds are located on the palate. So it's not only the tongue which is able to feel, but आपका जो ऊपर palate मौजूद है, that also has taste buds. Okay, and there are few also on the tonsillar pillars as well as on the epiglottis, even in the proximal esophagus. So you feel taste up to all these areas. Adults have, there is a misconception that they are only present on tongue. No, they are not. They are also present on other places. Adults have about 3,000 to 10,000 taste buds, and children have a few more. Beyond the age of 45, many taste buds degenerate, and after the age of 45, आपका जो taste का sensation है, वो actually decrease होना शुरू हो जाता है. So that's an important point, guys. Alright, okay, so let's see what next we have to discuss about the taste stuff. Specificity of the taste buds for primary taste stimulus. Now, obviously people have done a lot of research. Microelectrode studies from single taste buds show that each taste bud usually respond mostly to one of the 5 primary tastes. आपको बताया था ना, sour, sweet, salty, bitter and umami. So हर taste bud ऐसा माना जाता है कि they have their primary stimulus and then they also respond to others, but each taste receptor is ideally excited by a particular receptor. यानी अगर एक receptor ऐसा है which is designed for feeling sweet things, will probably not be activated to the similar level by sour stimulus. Okay,
Now, some physiological, hardcore physiology stuff, receptor potential, the membrane of the taste. मैंने आपको बताया ना ये एक cell है, so there will obviously be a cell membrane, there will obviously be ion channels, there will obviously be ion movements, depolarization. So let's talk about all these stuff now. The membrane of the taste cell, like that of most other sensory receptors, is negatively charged on the inside with respect to the outside. So inner, negatively charged. Application of a taste substance to taste hairs causes partial loss of this negative potential, and this is then known as depolarization. Normal stuff, हर सेल में ऐसे ही होता है. In most cases, the decrease in the potential within the white range is approximately proportional to the logarithm of the concentration. जितना ज़्यादा यहाँ पे stimulus आएगा, उतना ज़्यादा depolarization होगा. The change in the electrical potential in the taste cell is then known as the receptor potential for taste. Easy stuff. हर सेल में यही हो रहा है, depolarization ऐसी होती है. The mechanism whereby most stimulating substances react with taste villi to initiate the receptor potential is by binding to the taste chemical. So that's not an important paragraph, that's all common sense. Okay, there will obviously be some chemical coming in, changing the shape of the ion channels, ion entry in there, and obviously change of the potential. The type of the receptor protein in each taste villus determines the type of the taste that will be perceived. For sodium ion and hydrogen ion, so sodium ion, salty taste, hydrogen ion, sour taste, which elicit salty and sour taste respectively, the receptor proteins open specific ion channels, likely the epithelial sodium channels. Okay, यानी अगर आपके मुंह में कोई एसिडिक चीज आ जाएगी, so एक particular receptor पर हाइड्रोजन आयन जाके बाइंड करेंगे और सोडियम चैनल्स ओपन होंगे. However, for sweet and bitter taste, the portions of G protein coupled receptors that protrude through the apical membrane that activate the second messenger transmitter substances, they are involved. Okay, so there are two different mechanisms to initiate the excitation potential. Sweet tasting compounds are detected, यानी गुलाब जामुन अगर आप खा रहे हैं, they're a combination of two closely related G protein coupled taste receptors, T1R and T1R2 and T1R3. The receptor responsible for umami taste is believed to be a complex one. मेरे हिसाब से it will be a combination of several receptor types. Bitter taste is sensed by another family called T2R. So if you can remember, that's fine. Even if you don't, it's okay. और sour taste के लिए कौन से receptor है? So these receptors are sometimes asked in the examination. So it's worth having an idea what we are talking about. Generation of nerve impulses by the taste bud. Now once they have found what we have eaten, now the nerve fibers come into play. On the first application of the taste stimulus, the rate of discharge of the nerve fiber from the taste bud rises to peak in a small fraction of a second. फौरन आपके नर्व में impulses पास होना शुरू हो जाती हैं. Then the transmission of the taste signals into the central nervous system. So ये जबान की कहानी समझ में आ गई कि केमिकल पड़ा, केमिकल सेंस हुआ और अब वो नर्व में कंडक्ट हो गया. Now the nerves will take them obviously to the higher centers for interpretation. Okay. Now the neuronal pathway for transmission of taste signals from the tongue to the and the pharyngeal region as well into the central nervous system is now the next topic that we have to discuss. Taste impulses from the anterior two-thirds of the tongue passes first into the lingual nerve, then through the chorda tympani into the facial nerve, and then finally into the tractus solitarius. So you have to remember all them. Now, taste sensations from the circumvallate papilla, और ये वो papilla था जहाँ सबसे ज़्यादा taste buds मौजूद थे, मैंने आपको already बता दिया है, ठीक है? So they are transmitted through the glossopharyngeal. So remember the nerves which are involved: lingual nerve, facial nerve, anterior two-thirds से, and then circumvallate papilla से glossopharyngeal में जा रहा है, right? Finally, a few taste signals are also transmitted into tractus solitarius from the base of the tongue and other parts of the pharyngeal region via the vagus. So actually there are 4 nerves involved in there. So depending upon what we are talking about, if we are talking about the anterior part of the tongue, it's a different input. So this is the anterior part of the tongue, for example, and the anterior part of the tongue is going via the facial and the lingual. If we talk about the circumvallate papilla portion, then the glossopharyngeal nerve, right? And the vagus nerve from the the posterior part of the tongue. So remember which nerve is carrying fibers from where. All taste fibers synapse in the posterior brain stem. So ultimately they are coming in the brain stem and they synapse here. And these nuclei send second order neurons then to a small area of the ventral posteromedial nucleus of the thalamus. So यहाँ से fibers ultimately जाएंगे कहाँ तक? Thalamus तक. So these are the second order neurons. Thalamus तक पहुँच गए. And from, obviously यहाँ thalamus पे ये terminate करके, but they have projections and connections with other parts of the brain as well. Okay. Right. From the thalamus, then what happens? Third order neurons are transmitted to the lower
tip of the postcentral gyrus in the parietal cerebral cortex, where it curls deep into the sylvian fissure, and that is the area, basically, this is the area where the taste is perceived, okay? Taste reflexes are integrated in the brain stem. From the tractus solitarius, many taste signals are transmitted within the brain stem itself into the superior and the inferior nucleus. So they have, when they land up here, you know, आप जब खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली जब आप खाना खाते हैं तो इट मेक सेंस ना कि ऐसा तो नहीं होता जो निवाला आप मुंह में डालते हैं उसमें आप कहते हैं कि यार सोर कंपोनेंट इधर चला जाए, एसिडिक कंपोनेंट इधर, ऐसा तो यू कांट डू दैट. सो ऑल ऑफ द टेस्ट रिसेप्टर्स आर रिसीविंग इम्पल्सेस, ठीक है ना. हर खाने में बास खाने ऐसे होते हैं जिसमें सोर टेस्ट भी होता है, हल्का फुल्का मीठा टेस्ट भी होता है, मतलब डिफरेंट टेस्ट हैं. सो ये सारे डिफरेंट टेस्ट अल्टीमेटली पहुंच रहे हैं आपके ब्रेन स्टेम में, एंड देयर दे आर ऑल इंटीग्रेटेड, अपवर्ड दे मूव टुगेदर, ओके, फ्रॉम, सो दे आर इंटीग्रेटेड. नाउ रैपिड एडेप्शन ऑफ द टेस्ट. एवरीवन इज फैमिलियर विद द फैक्ट दैट टेस्ट सेंसेशन अडैप्ट वेरी रैपिडली, often almost completely within a minute or so of continuous stimulation. Yet from the research studies as well, what happens is after some time you are adapted to that particular taste. So therefore the final extreme degree of the adaptation that occur in the sensation of the taste almost certainly occurs in the central nervous system. So not too much details are available here, so you don't have to worry this about how it is adapted, basically the system. But adaptation is a general phenomena of a lot of sensations that we have got. In simple words, ये होता है कि आदत हो जाती है. ये आदत हो जाने वाला जो phenomena है, that's very very common, okay? और taste का तो ऐसे ही है यार, नई नई शादी हुई, बीवी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा, थोड़े अरसे के बाद adaptation हो गई, right? That sort of story. Now, taste preference and control of the diet. Taste preference simply means that an animal will choose certain type of food over the others. Furthermore, its taste preferences often changes in accord with the body's need for certain type of, so I mean, some people, for example, prefer biryani, some prefer simple dal, some prefer vegetables, some prefer all the time junk food, pizza and KFCs and those sort of stuff. So, we have taste preferences, obviously, okay? And there were several experiments done, so these are not important for you to understand. The same phenomena are also observed in everyday life. For example, salt lakes of desert region are known to attract animals from far and wide. Okay, well, not important. Just leave that. So the only point important here is the fact that because the taste, pathways are very well connected with different emotional and behavioral parts of your brain, you have choices. और ये आपको याद आता है कि यार ये चीज़ आज खानी है, तो वो टेस्ट के साथ लिंक है सारी चीज़ें, okay? Now, that's basically it. The phenomena of taste preference, इस पे हमने बात कर ली. Certainly result from some mechanism, I mean, ये जुमला सुने. Certainly results from some mechanisms located in the central nervous system. Well, basically we don't know. अभी इनको ये कहते हुए इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं कह देता हूँ. We don't know exact details, okay? Like for many other parts of the central nervous system, we just don't know how does that work, but we know for sure कि ये जो pathways हैं, they are well connected with different parts of the brain, and to my firm belief, there will be pathways which we still don't know today. हमें पता भी नहीं होंगे. So it's all very complicated system, but it's a beautiful system that nature has given us, okay? Now let's talk about the sense of smell, which is the next topic to be covered today. And smell is least understood of our senses. I mean, समझ में नहीं आता. Actually, कुछ भी बड़ी मेहरबानी इनकी जो इन्होंने लिख दिया कि it is not very well understood. Actually, a lot of things are not understood in physiology. But anyways, we have an olfactory membrane. So the olfactory membrane, जिसकी histology अभी हम देखते हैं, it lies in the superior part of the nasal cavity. Obviously, nose is the bed जहाँ से आप चीजें सूंघते हैं. Medially, the olfactory membrane folds downward along. ये हमने पूरी एनाटॉमी तैयार करी रखी है ना. अभी थोड़े सेल्स वगैरह की बात करते हैं कि जिस तरह यहाँ हमने टेस्ट सेल्स का जिक्र किया था. ऑब्वियसली यहाँ भी ऑल्फैक्शन को फील करने वाले कोई ना कोई सेल्स होंगे. देयर विल बी सम ऑल्फैक्टरी सेल्स. दे ऑल्सो हैव ऑल्फैक्टरी सीलिया. सो स्मॉल chemicals in the air hit them and the whole story begins. And then obviously you see the cells. General idea kya hai? They will be connected with some nerve fibers, and the nerve fibers will then be connected ultimately to the central nervous system. और देखिए यही हो रहा है. These are the olfactory cells. यहाँ से ये देखें, ये आप कुछ endings निकल रही हैं. फिर there is a hump of synapse. Glomerulus आपको लगता है सिर्फ किडनी में होता है, ये देखें आपकी नाक में भी है. And then the mitral cells and the axons of the mitral cells make the olfactory tract. You see, this is how it is connected then from here to the central nervous system.
Okay. Now these cells are present obviously olfactory membrane at a location जहाँ ये air के साथ contact में आ सके. So they are in the nasal cavity, right? They have a total surface area of about 5 square centimeter in humans. Olfactory cells are the receptor cells for smell sensation. जैसे taste cells थे for taste, ऐसे olfactory cells हैं for olfaction. And they are actually bipolar nerve cells. There are about 100 million of these olfactory epithelium interspersed in the sustanticular cells. So there are supporting cells and then there are main receptor cells. And 100 million is a big number. So आपकी sense of smell बड़ी strong है. The mucosal end of the olfactory cells form a knob from which 4 to 5 olfactory hairs, which are also known as olfactory cilia, they arrive. So these olfactory cilia are important because they will actually catch the signal. Okay. Now, mechanism of excitation of the olfactory cell, how they are stimulated. The portion of each olfactory cell that respond to the olfactory chemical stimuli is the olfactory cilia. It receives it. The odorant, यानी जिसकी कोई ना कोई smell होती है substance, on coming in contact with the olfactory membrane, first diffuse into the mucus that covers the cilia and then it binds to the receptor protein. And each receptor protein is actually a long molecule that threads its way through the membrane about 7 times. So it's like a 7-time receptor. So here, if you look at the diagram, this is the olfactory cell, these are the cilia, and now you see what's happening there. So these are, so that's a small molecule. तो आप इसको imagine करो, ये आपकी nose है और आपने परफ्यूम लगाया, परफ्यूम के केमिकल ये निकले, आपकी नोज तक पहुंचे, यहाँ पे ये olfactory cell है, इसको हिट किया और इसको हिट करने के बाद यहाँ ये तो ये हो गया odorant, ये छोटा मॉलिक्यूल जो परफ्यूम का आया था, that's the perfume molecule, और ये आके इस रिसेप्टर को हिट कर रहा है, and then the whole G protein system is now activated, and then this is all linked with opening of the sodium channel. Sodium comes in, depolarization. Okay, see, सारी जगह गेम यही है, depolarization की कहानी है. अब वो सारी स्टोरी यहाँ लिखी हुई है कि इनसाइड पे G protein system is activated, adenylyl cyclase वाला, and ultimately you get opening of the sodium channels and you get depolarization. Okay, and the signal is then transmitted obviously from these cells to ultimately to the olfactory tract and the olfactory nerve. Right. The importance of this mechanism for activating the olfactory cell is that it greatly multiplies the excitatory effort, even if there is a weakest odorant. ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है because ये second messenger system usually augment करता है, मल्टीप्लाई करता है सिग्नल को. सो अगर हल्की सी भी कोई ऑडरस चीज़ मौजूद है, अच्छी स्मेल या बुरी स्मेल, you will be able to actually pick it. In addition to the basic chemical mechanism whereby the olfactory cells are stimulated, several physical factors affect the degree of stimulation. First, only volatile substances can be sniffed. Obviously, कोई चीज़ environment में vaporous volatile form में होगी तभी वो nose में enter होगी, है ना? Second, stimulating substance must be at least slightly water soluble so that it can pass through the olfactory cilia. Important point. Third, it is helpful for the substance to be at slightly lipid solubility as well. तो ये सारे characters होंगे तभी आप किसी चीज़ की smell को actually feel कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे. ठीक है? Now, membrane potentials and actin potentials in the olfactory cells. The overall picture मैंने आपको बता दी है, but let's talk about some numbers. The membrane potential inside the unstimulated olfactory cell is -55 milliwatt. So ये cell है, उसके अंदर सारा -55 है, but as soon as depolarization happens, sodium अंदर आएगा, so obviously this potential is going to change from -55 to -30. So that is something now a piece of cake for you. Wow, rapid adaptation here as well. जैसे टेस्ट में एडेप्टेशन थी वैसे यहाँ भी एडेप्टेशन है. The olfactory receptors adapt about 50% in the first second or after, so immediately you then ये होता भी है. I mean, इसकी एक बड़ी बुरी सी मिसाल दूँ. आप किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल हो, गंदी कचरा कुंडी, कचरा पड़ा हुआ है सारा. आप एंटर हो, स्टार्ट में आपको बहुत बुरी स्मेल आएगी, थोड़ी देर बाद पता भी नहीं चलेगा. You are adapted. Okay. Search for the primary sensation of the smell. Now, in past, most physiologists were convinced that the many smell sensation are subserved by a few. और ये सारी स्मेल्स हैं जो प्राइमरी स्मेल्स कहलाती हैं. टू बी ऑनेस्ट मुझे सबको पता भी नहीं है, ढूंढना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी क्या है. कुछ मैं बता सकता हूँ. पेपरमेंटी फॉर एग्जांपल, पुदीने की तरह फ्रेश, वाओ. पंजेंट भी मुझे पता है. पुट्रेट मुझे पता है, अगर कोई चीज़ बर्बाद हो रही है, कहीं पे कोई सब्जियां पड़ी हैं, सड़ रही हैं, उनकी जो स्मेल है दैट इज पुट्रे. फ्लोरल, फूलों की खुशबू. बट आई गो थ्रू देम एंड सी व्हाट आर द डिफरेंट स्मेल्स दैट यू कैन एक्चुअली परसीव. देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ऑर्डर ब्लाइंडनेस. देयर आर पीपल जिनके olfactory epithelium destroyed है, they cannot actually feel any smell. Then affective nature of smell even more so than taste has affective quality of either pleasantness or unpleasantness.
आपके करीब कोई बंदा आके बैठे जिसमें से बुरी सी स्मेल आपको आ रही हो, कितना बुरा लगेगा, और कोई बंदा करीब से गुजरे जिसने अच्छी सी स्मेल लगाई हुई हो, कितना अच्छा लगेगा. सो आई मीन यू मेक वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज विद स्मेल. That's the point, okay? Now, threshold for smell. One of the principal characteristics of a smell is the minute quantity of a stimulating agent in the air can elicit. So, even in very small quantities, you can smell the odorous substance. Okay? For example, methyl mercaptan. इसकी अच्छी नहीं होती smell बहरहाल, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा भी हो, 1 trillionth of a gram, you can sense it. Okay? Gradation of smell entities not relevant for you. आपके काम की चीज नहीं है. Now, जनरल हमने जितने भी स्पेशल सेंसेस किए हैं, मैं आपको बार बार यही बात बताता रहा हूँ कि हाउ टू अप्रोच देम इज, अगर आई है तो रिसेप्टर सिस्टम क्या है, जैसे कि आई, उसके बाद उसकी ट्रांसफर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर सीएनएस में क्या प्रोसेसिंग हो रही है. एयर का भी हमने ऐसे ही किया कि देयर इज अ रिसेप्टर सिस्टम, उसके बाद सीएनएस में क्या ट्रांसमिशन हो रही है. टेस्ट का भी हमने ऐसे ही किया. अब इसका भी ऐसे ही कि सीएनएस में ऑर्डर किधर प्रोसेस होता है. द ऑल्फैक्टरी पोर्शन ऑफ द ब्रेन वर अमंग द फर्स्ट ब्रेन स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड इन द प्रिमिटिव एनिमल्स, एंड बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, you don't go in the areas where there are bad smells, I feel bad. In fact, part of the brain that originally subserved olfaction later evolved into basal brain structures that control emotion. So you see, evolutionary perspective say olfaction is very much linked to the behavioral and emotional systems present in the limbic system. Right? Now, transmission of the olfactory signal into the olfactory bulb. The olfactory bulb is shown in figure. So here we see the olfactory bulb area and the connections. The olfactory nerves fiber leading backward from the bulb are called the cranial nerve 1, the olfactory tract. In reality, both tract and the bulb are an interior outgrowth of the brain tissue. Basically, it's arising from the brain, lying over the cribriform plate of the skull, if you remember the anatomy. The cribriform plate has multiple small perforations through which an equal number of small nerves pass upward. और ये ऊपर ये, so this is the olfactory bulb area जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? What else do you need to, I don't want to make it complicated for you. Each bulb has several thousand glomeruli. So glomeruli are the synaptic areas, जो भी मैंने यहाँ diagram में आपको दिखाया भी था. So this olfactory bulb, that's part of the brain actually. So your nasal epithelium is very much in close proximity with your brain. Okay? So remember this part. फिर ये जो ग्लोमेरुलाई हैं, इन ग्लोमेरुलाई से each glomerulus has the terminal for dendrites of about 25 large mitral cells and about 60 smaller tufted cells, or these dendrites receive synapses from the olfactory cells. और फिर यहाँ से फाइबर्स निकल के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन तक कनेक्ट होते हैं. द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट देन एंटर्स द ब्रेन एट द एंटीरियर जंक्शन बिटवीन द मेसेनसेफलॉन एंड द सेरिब्रम, एंड यहाँ से डिफरेंट पाथवेज जो निकलते हैं. फॉर एग्जांपल, वन इज द मीडियल ऑल्फैक्टरी एरिया तक जा रहा है, एंड द अदर वन पासिंग इनटू द लेटरल ऑल्फैक्टरी एरिया. द मीडियल ऑल्फैक्टरी एरिया represents a very primitive olfactory system, whereas the lateral olfactory area is the input to the following: less old olfactory system and a newer system. These are the classification words that you have to remember. Remember the bigger picture. The bigger picture is, here would be your nose, nasal epithelium से ये यहाँ, और फिर यहाँ से different parts of the brain. Okay, as the bigger picture. Primitive olfactory system है, which is also called the medial olfactory area. It consists of a group of nuclei located in the mid basal portion. Not important किधर मौजूद है exactly, ये इतनी सारी details confuse मत करें अपने आप को. Most conspicuous are the septal nuclei, which are midline nuclei that feed into hypothalamus. So that's connected very well with hypothalamus. That's important point. The importance of this medial olfactory area is best understood by considering what happens in animals when the lateral olfactory areas on both sides are removed and only the medial system is working. The removal of these areas hardly affect more basic responses to olfaction. There you go. अगर lateral दोनों निकाल दें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, यानी medial is very important for olfaction. Okay? So that's an important point. However, अगर हम lateral areas को निकाल देते हैं, then जो more complex और conditioned responses हैं with the memory, with the behavior, वो abolish हो जाते हैं. So that basically means कि जो medial olfactory system है, that is for primary olfaction, लेकिन हमारा purpose सिर्फ सूंघना या सिर्फ smell को feel करना नहीं है. हमारा purpose इससे ज़्यादा है, और ये किसी भी sense के लिए बात ठीक है. बंदा आपके सामने खड़ा है, आपकी आई को सिर्फ इसकी इमेज नहीं बनानी, इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के साथ कनेक्ट करना, इसका परसेप्शन विद इमोशन, विद बिहेवियर, ये सब इंपॉर्टेंट है.
ठीक है. Then the lateral olfactory pathway. The lateral olfactory area is composed mainly of the peripariform and piriform cortex plus the cortical portion of the amygdaloid nuclei. From these areas, signal pathways pass to almost all portions of the limbic system. That's important. So it is connected. यही बात मैंने यहाँ बताई थी कि अगर lateral system निकाल दें, सिर्फ medial system बचे, तो olfaction तो ठीक रहेगी, लेकिन connection with the emotions ठीक नहीं रहेगा. That's the important point. The newer pathway, a newer olfactory pathway that passes through the thalamus, मतलब ये बाद में discover हुआ होगा, that sort of story, that passes through the thalamus, passing to the dorsomedial thalamic nuclei and then to the lateral posterior quadrant of the orbitofrontal cortex has been found. On the basis of the studies in monkeys, this newer system probably helps in conscious analysis of odor. मैं आपको बात बताऊं बॉस, आपका जो पूरा nervous system है, it is amazingly designed. And we have not been able to dissect out कि exactly क्या डिज़ाइन है. हम अपनी थ्योरियाँ ले आते हैं, ज़ाहिर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में करते हैं और फिर कहते हैं कि ये काम यूँ होता होगा, ये यूँ होता होगा, ये पार्ट ऑफ द ब्रेन निकाल के देख लेते हैं अब काम पे क्या फ़र्क पड़ता है. सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव बीन डूइंग, द फंक्शनल स्टडीज, और उन्हीं से हमको इतना पता लगा है कि ये किस तरह से पाथवेज कनेक्टेड हैं. बट आई बिलीव इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पाथवेज हैं जो अभी तक हमको पता भी नहीं है. Okay. Now the summary is that there appear to be a primitive olfactory area, जिसका काम basic olfactory reflexes को monitor करना है. Then there is a advanced area या newer area जिसका काम olfaction को different parts of the brain से connect करना है. ठीक है. So centrifugal control of the activity in the olfactory bulb in the central nervous system. Many nerve fibers that originate in the olfactory portion of the brain pass from the brain in the outward direction into the olfactory tract to the olfactory bulb. These nerve fibers terminate on the large number of the granule cells located among the mitral and the tufted cells of the olfactory bulb. The granule cells send inhibitory signal to the mitral and tufted cells. So this inhibitory feedback may be a means of sharpening a person's specific ability to distinguish one odor from the other. So not only, this is important guys, not only that your nose or the nasal epithelium is sending signals to the brain is also sending signals to different cells in the olfactory bulb so that their response can be inhibited or modulated. Okay, so that's all about the special senses. We are done, and next we will start a new unit of physiology. All the very best and stay tuned. Subscribe the channel, share the videos. My name is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures.